हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे एक अच्छे से राइटर के बारे में जिसने अपना बुक लिखा है डॉट कॉम सीक्रेट्स। ठीक है, तो उसने एक उसमें जो है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में उसने एक बुक लिखा है और उसने ये कहा है कि आप ऑनलाइन बिजनेस जो है कैसे ग्रो कर सकते हो और इंटरनेट का क्या पावर है, उसने ये बताया है अपने बुक में। ठीक है, तो चलते हैं इसी वीडियो की तरफ और आप जान सकेंगे उसी के सीक्रेट्स। ठीक है, तो सारे तो नहीं बता पाऊँगा लेकिन कुछ बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो Dotcom Secret is a hands-on guide to digital marketing and growing online business by harnessing the power of the internet. Okay, marketing means the plenty of things to a lot of people. Users often have negative feelings related to this concept, thinking they are being manipulated into by marketers often use their powers in the wrong way, creating useless leads and over promoting products. The result digital environments where no one gets what they want. Okay, so writing by ClickFunnels founder Russell Brunson Dotcom Secrets delves into the concept of marketing from A to Z and teaches marketers worldwide how to build effective campaigns or grab the user's attention and deliver relative result for them into the buying process. All through the sales funnel approach, becoming a great marketer is not about knowing the theory but practicing it. For this reason, we are explore the three best practices every marketer should know. Every successful business marketing strategy has a target audience and is an ideal customer. Create a character for your business that people can relate to and connect to. A successful online campaign has 5 core elements. Let's start with the beginning lesson, then we will explore all of them वन बाय वन। ओके, तो असल में बात क्या है कि डॉक्टर सीक्रेट्स इसने बताया है कि मार्केटिंग का एक ऐसा वर्ड आता है जैसे ही हम उसको सोचते हैं तो हमें वो जो है एक नेगेटिव फीलिंग देता है। ठीक है कि यार ये मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि मार्केटिंग एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने ये कहा है कि मार्केटर्स ऑफन यूज़ देयर पावर इन द रॉन्ग वे। मार्केटर्स क्या करते हैं कि वो अपने पावर्स को जो है वो रॉन्ग वे में इस्तेमाल करते हैं बजाय कि उसको जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें। ठीक है, यूजलेस लीड्स एंड ओवर प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उसने ये एक बड़ा राइटर है, तो यकीनन क्लिक फनल का ये फाउंडर है, तो इसने A to Z बताया है, सिखाया है। ठीक है, तो वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहला इसका लेसन है अ टारगेट ऑडियंस एंड अ बायर पर्सन आर इसेंशियल टू एनी बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो किसी भी बिजनेस स्ट्रेटजी में ये बात तो तय होती है कि आप कहाँ पे सेल करना चाहते हो, आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ की है। ठीक है, आपकी ऑडियंस क्या है, आप किसको ये प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, वो क्या बुढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हैं, औरत हैं, क्या हैं। ठीक है, और किस कंट्री के हैं। ऐसे तो नहीं कि एक ऐसी प्रोडक्ट हो जो आपकी यूएसए में चलने वाली हो और उसकी मार्केट आप जो है एक छोटे कंट्री में कर रहे हो, तो वो तो यकीनन नहीं खरीद पाएंगे ना। When you're building a marketing strategy, there are plenty of aspects to consider. It all starts with who you want to address and how you want your get your message across. To figure out how your marketing campaign should begin, you will have to look at your target audience and more especially at your ideal client. A target audience consists of the market you want to address. To define it, you will have to consider its demographical, social, economical, and behavioral factors. In the process of defining your buyer person, you can ask 3 questions. Where is the person located? What's their average income? What do they like to see and hear? What's their gender? Where can they be found? Okay.
तो यही चीज़ें होती हैं कि आप अगर टारगेट ऑडियंस करना चाहते हो तो उसका यही प्रोसेस होता है कि आप उससे यही चीज़ें ज़हन में रखो कि वो कौन सा पर्सन है जो वो कहाँ पे रहता है जो आपसे ये चीज़ खरीदेगा, उसकी एवरेज इनकम कितनी होगी जो आपको ये खरीदेगा, what they have to like to see and have, ठीक है। तो what's their gender and where can they be found, ठीक है। So these are just some ideas of questions that you can implement in your target market study. Generally what you need to do is answer as many questions as possible to narrow down your target audience. Then it will be easier to come up with your ideal client figure or your buyer persona. When you have a approximate figure of your ideal customer, targeting your marketing efforts gets much easier. If you know who you are speaking to, it's easier to design the right campaign and have your prospects let your message and feel like you are really speaking to them, not just trying to sell them something. Okay, so hopefully this one tutorial lesson one is understanding. Okay, so if you have any query you can ask in comment section. Thank you very much.